पॉलीमॉर्फिज्म तक हो गया था ना? will now be recorded. Yes, sir. हाँ जी संदीप, वो आगे आएगी चीज, वो चीज आगे लूंगा जो आप पूछ रहे थे ना, एग्जाम्पल आगे लूंगा, वो आएगा। सर जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसके लिए बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, आपने स्क्रीनशॉट एक शेयर करा था ना, वो आगे अच्छा आएगा अच्छा पिक्चर में। हाँ ओके सर। so today we will discuss about code sharing, ठीक है। और implicit explicit वेट हमने implicit explicit conversion, data type conversion करा। have we discussed about implicit and explicit data type conversion? Yes, sir. ठीक है जी। so today we will discuss about code sharing. Let's suppose I have written the code and I want to share my code with Sanjay. How I can share, right? एक मिनट रुकना सब लोग। हाँ जी। So I want to share my code with Sanjay. So this is Deepak Eclipse, right? This is Deepak Eclipse and this is Sanjay Eclipse. So Deepak wants to share his code with Sanjay. There are source code management tool in the market. There are source code management tool in market like GitHub, Bitbucket, SVN. By these tools we can share code with each other, right? These are version control tool. क्या बोलते हैं इनको? These are also version control tool, right? These are the source code management tool, right? Deepak wants to share his code with Sanjay. How Deepak can share? Firstly, code will go to the local repository. Repository means folder, and local repo will be created where? Deepak system. तो पहले कोड कहां जाएगा? Where code will go first?
Where code will go first? Local repository. Local Local repository. repository. And after that, where it will go? Where it will go? Centralized repository. Centralized repository. Where it will go? Centralized repository. This process is called commit and push. What we will call it? Commit and push. Commit and push. Now, Sanjay needs the code. Where code will come first? Local repo. Good one. Local repo. Local repo in Sanjay system. Right after that, what Sanjay will do? Sanjay will import the code. So this process is called pull, and after that what Sanjay will do? He will import the code into the Eclipse. Any doubt? हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट डालेगा कोई ग्रुप में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट, कैन एनीवन प्लीज पुट द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप? हाँ जी, डाल दिया। ठीक है, अनिरुद्ध आप अपने वाले ग्रुप में भी डाल दो। हाँ सर, वही कर रहा हूँ, डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। So Deepak wants to share his code with Sanjay, right? So this is process for code sharing, source code management tool, code sharing. एक बार चैट में सब लोग अपडेट करो प्लीज। बाकी लोग अपडेट करो प्लीज। Firstly, we have to create the centralized repository on the github.com. Which source code management tool we are using? Which source code management tool GitHub. we are using here? GitHub. GitHub. Right, there are in market, there are some alternate tool as well, Bitbucket, SVN. Way of working is same. Way of working is same. Now, where we will go? Go to the GitHub.com github.com. and git.com. Right, we have to create a account here. Need to create account on github.com. Right, go to github.com. You have to do the sign up. Right, I have already. Right, here what we need to create here? Repository. Repository. Go to the plus symbol, new repository. Give the name 9:30 a.m. batch repository. You can give any name. Scroll down and create repository. Right?
each repository having a each centralized repository having a unique URL. हर रिपोजिटरी का क्या होता है? Unique URL. Unique URL. Right now, while pushing the code, pushing or pulling the code from Eclipse, right? There are two ways for pushing or pulling the code. There are two ways. First one, you can use Eclipse for code push and code pull. Internally, Eclipse will also use the git commands. Second, you can use the git commands directly for code pull and code push using git bash. तो कोड को पुश और पुल करने के कितने वे है कुणाल? Two ways. Two ways. First one, Using Eclipse, hmm, internally Eclipse will use the git commands, hmm, and the second is git commands directly. We can use uh, code using git bash. yes, we can use git commands directly for code pull and code push using git bash. Any doubt, anyone? Which option we are going now? Eclipse, I think. Yes, as of now we are using Eclipse for code pull and code नॉर्मली कंपनीज में push. क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, मतलब जनरली Git क्या यूज वैसे होता है? आपका git कमांड चलती है, बट दोनों पता होना चाहिए. Normally in companies git commands directly used. सर ये गिट बैश क्या होता है? Git bash आपका एक इंटरफेस है. Git bash is, we can say, it's a CLI, command line interface. Like we can say like it's like a terminal, Linux terminal, or we can say like CMD. जैसे हमारा CMD की विंडो होती है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, सेम वैसे फॉर रनिंग द गिट कमांड्स. क्लियर? करेंगे, आगे करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक जी. नाउ if you are using Eclipse for code push and code pull, then we need to select HTTP option for the URL. Which option? HTTPS option, right? If we are using git bash via git commands for code push and code pull, then we need to select SSH option for the URL. Now which option we are using? HTTPS. HTTPS. If we using Eclipse, then go to HTTPS and go to Yes. git command, then SSH. Yes. Copy this URL. This is the URL. This is the URL of which repository? 930 and Centralized repository. Amit Khanna. Clear भाई? Amit Khanna. Yes, sir. Clear.
Chalo ji. Now let's suppose I want to share this Z1 project with Amit, right? Which project I want to share? Z1 project. Which project? Z1. Where code will go first? See the diagram. Local repository. Local Good one. repository. Local repository. Right click on the project. Right click on the project. Then team. And which option? Share project. Which option? Shared project. Share project. Now, what's your current location? What do you mean by current location here? So 12 p.m. batch. It's your workspace location, right? Where we are saving the code. That is your workspace location, right? जब Eclipse को Right. open करते हो, Yes, sir. that is your workspace location. So this is your current location, is the your workspace location. Target location. Where code will go? Centralized. Centralized Why we are saying local centralized repository? Why we are saying local centralized local. Local repository. local repository, right? Click here, create. Where local repository will be created? Local. In In the the local machine. local system. Yes. You can give any name, right? Finish. Now, current location is your Workspace. Workspace hello location. Workspace. workspace Workspace location. location. And what's target location? Local Local system repository. location. Local repository location, right? Local repository location. Click here, finish. Now, where code has been moved? कहाँ गया code? Local repository. Local Local repository. repository. Local repository. Now, after that, where we have to push this code? Centralized. Centralized Centralized. repository. Centralized repository. Do we have the link of the centralized repository? Yes or no? Yes, sir. We have to generate a token. We have to generate a token on the GitHub. Now, what we have to generate? Token. How we will generate? Go to GitHub. Go to github.com. Now, go to the settings. Which option? म्यूट कर लो एक बार सब लोग प्लीज म्यूट कर लो go to settings then developer setting right developer setting then personal access token right personal access token let me show again setting then scroll down developer setting then personal access token I have already this testing purpose let me delete it I'm deleting it now click here generate new token note you can give any name for example expiry you can select no expiry here you can select repo workflow right all the option you can select now after that what we will do generate token you can see a token has been generated copy this token right we have to generate token how go to setting then developer setting then
generate token. Right? Now go to where? Go to Eclipse. Where code has been moved? Local Local. Repository. Where code we have? Local repository. Local repository. Any doubt, anyone? Now right click on the project. Right click on the project, then team commit. Which option? Commit. You will get a option here, git staging. Git staging. If you are not able to see the git staging, how you can find? Go to window, show view, other, and which option? Git staging. Now in the git staging, there are two sections, unstage, and second one is Stage. right, unstage and stage. Unstage. Unstage means it will show the files. It will show the files in which we have done the changes, or it will show the files which are ready for the commit. Stage, we will keep those files which we want to push. चलो सारी फाइल को पुश करना चाहते हैं. Do we want to push all the files? Yes or no? Yes, because we are doing Yes. first time. पहली बार कर रहे हैं ना कोड को पुश, right? Hmm. So select all the files, Control A, drag and drop to where? Stage changes. Stage Stage changes. changes. Commit message, pushing the code first time. Now commit and push. Have you copied the URL of the repository? Yes or no? Have you copied the repository URL? Yes, बोलो yes. Yes. भाई. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Copy it. Now select here URL. Amit Khanna, perfect example of API, REST API, right? API का example है ये. Username Deepak Channa. Password, have you generated the password? Token, yes. Now next, finish. Again asking for username. Store in secure store. Code has been pushed. Click on close. Go to the where? Centralized repository. What was the name of our centralized repository? 30 batch. 9:30. 9:30 in batch. Anji, पासवर्ड याद करना पड़ेगा इतना बड़ा हमेशा. नहीं कॉपी करके रख लो भाई. भाई कॉपी करके Copy- रखना पड़ेगा बार बार. हाँ कॉपी करके, वो एक बार आपको एक बार डालना होगा. स्टोर करवा दोगे ना फिर आपसे बार बार नहीं पूछेगा. जैसे Okay. मैंने क्लिक करा था ना, आई हैव क्लिक स्टोर इन सिक्योर स्टोर. Okay.
हाँ जी, ठीक है। नाउ गो टू द वेयर centralized repository. What was the name of our repository? 9:30 batch. Go to your repositories. 9:30 a.m. batch repository. हाँ जी, कोड आ गया यहाँ पे? Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes, sir. Right? Right? Now, let's suppose if I'm doing changes in a file. Let's suppose if I'm doing changes in this file. Right? There is a single file. I'm doing changes here. CISO changes done. YDC. Control S. क्या करोगे? Save करोगे. Now we are able to see git staging. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Click on the git staging. Unstaged changes. Which file it is showing? Class हाँ 1 जी dot Kunal. Java. Class1.java. What is class1.java? Only Yes, that File file where we have source made package. changes. Source the packaging. file. Yes, the file in which we have done the Change. changes. We want to push this file. Yes. Drag and drop to stage. Right. Again, commit and push. Kunal, do we need to enter the password again? No, No. system does No, no. not ask for it. Yes. Refresh it. How many commits we have done? Two commits. Two commits. Commits. You can see both the commits are here. What we have done in the second commit, you can see. Right. क्या Yes, करा sir. now we are able to see the changes here in GitHub centralized repository. Yes or no? Yes, sir. Now I will work as a as a Amit. I don't have code in my Eclipse. मेरे पास मेरे कोड मेरा नहीं है. हाँ जी, मेरा हाँ एक जी, क्वेश्चन प्लीज. है एक। सो सपोज हमने 10 या 20 कमिट्स कर चुके हैं, ठीक है, बड़े सारे चेंजेस करते गए हम, तो जब हम सपोज हमने थर्ड लास्ट पे मूव करना है, मतलब आई डोंट नीड लास्ट, जो मैंने रिसेंट चेंजेस करे हैं, मुझे उससे पहले जाना है, तो आगे तो आ बैकएंड जाएगा पे वो आगे. हाँ, हाँ हो हाँ कैसे रहा वो होगा, बैकएंड पे we, कैसे फंक्शनैलिटी we वर्क will करी होगी? we will discuss about git commands. तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा ये चीज. अगर एक पर्टिकुलर कमिट पुल करना है, राइट, आई विल डिस्कस. ओके। एक मिनट रुकना. एक मिनट रुकना, 1 मिनट देना सोलो. हाँ जी. अब मैं कैसे काम करूंगा? अभी कैसे As काम Amit. कर रहा था? एज ए अमित. आई डोंट हैव दिस कोड इन माई सिस्टम. लेट मी डिलीट दिस कोड. मेरे पास ये कोड नहीं है, राइट. डिलीट इट. डिलीट कर दिया, राइट. Yes, sir. नाउ for pulling the code, Amit must have the Deepak's repository URL. अमित के पास क्या होना चाहिए? Deepak's repository URL. हाँ मुझे जी. क्लियर है। तो URL है अमित के पास. यस. अगर नहीं है तो यहाँ पे सर्च करो. सर्च हेयर 9:30 a.m. repository. This was the name of the repository. Copy it. Search here.
right? Click on the code and this is the repository URL. From here also you can take. अमित के पास अब रिपोजिटरी का URL आ गया, yes or no? Yes, sir. Yes. Now, where Amit will go first? Go to window, show view. Where code will come first? जब Amit pull करेगा, when Amit will pull the code, where code will come first? Local repository. Local repository. Local repository, right? So go to here, where? Window, show view. नहीं है, एक बार देखो एक बार भाई. Window, show view, other, which option? Git repository. Which option? Git repository. Click on the open. यहाँ पे भी डिलीट कर दो सब कुछ, क्योंकि अमित के पास ये सब चीजें नहीं होंगी. ठीक है, अमित के पास ये सब चीजें नहीं है. What अमित wants to do? Clone a, clone Git means copy. copy, sir. What Amit wants to do? What Amit wants to do? Pull the code or copy the code. Clone a Git repository. हाँ जी, repository का URL copy करा था. Have you copied the repository URL? Yes or no? Yes. Yes, sir. All these three information will be filled by itself. Here Amit will enter what he will enter, his credential. Amit किसकी credential डालेगा यहाँ पे? अपनी, sir. His credential. अपने, है ना? Now click on next, finish. कोड आ रहा है आपका कहां से? आगे कोड. अभी कोड कहां पे आया? Local Repository. लोकल रिपोजिटरी. Central से local में. हाँ जी, बिल्कुल सही. Now where we need to import this code? Workspace. space. Right click on the project. Right click on this local repository. Go to properties. Copy the path before .git folder. Before .git folder. कहां तक का path copy करोगे? Till this point. Copy. Now what we will do? We will import this project. Where? Go to file, import. Which option? Existing project into follow. Workspace. Existing project into workspace. Next, we have copied the path. Yes or no? Paste Yes, here. sir. Paste here. Browse. Finish. हाँ जी, आगे कोड. Yes or no? Yes, sir. So this is the process. What we will call? Sharing. Git. हाँ जी. What we will call this process? Code sharing. Code sharing. Code pull. क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? Code pull. कोड पुल. तो कोड पुश, कोड. कोई डाउट किसी का? सर ये जैसे अमित ने इसको पुल कर लिया, उसके बाद चेंजेस करके सेम रिपोजिटरी में अपडेट कर पाएगा? कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा. रिपोजिटरी तो दीपक की थी ये. कॉमन रिपोजिटरी है दोनों की ना. ओके. अगर हमारे पास यूआरएल है रिपोजिटरी का तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. सर इसमें एक पॉइंट के बाद ना उसका प्रॉम्प्ट आने लगता है ब्रांचिंग के लिए, तो हम बिल्कुल वो ब्रांच का कंसीडर करेंगे. हाँ,
जी सर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब पहले हाँ हाँ अलाउड नहीं था लेकिन अब अलाउड है। मतलब वो मैंडेटरी हो गया करना कि आपको ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट ही करना पड़ता है। करना पड़ेगा। ब्रांचिंग की एक वीडियो थी ना निरुद्ध आप लोगों के पास भी? सर ब्रांचिंग की वीडियो नहीं थी हमारे पास, पर हाँ वो होगी, एक बार आपने शायद एक्सेस नहीं लिया था, तो जी लास्ट सर। की जो क्लास थी ना उसके अंदर ब्रांचिंग और ये सब चीजें करी थी डिस्कस हमने। शायद आपके पास आपने एक्सेस नहीं रेज करा था, मेरे को ध्यान अच्छे से, तो एक जी बार सर। चेक करना, वो ब्रांचिंग ब्रांचिंग बहुत अच्छे से डिस्कस करा था सर उसमें। एक में तो आपने गेट कमांड्स का बताया था पूरा। हाँ उसके अंदर ब्रांचिंग ब्रांचिंग भी पूरे डिस्कस करा था। जी सर, जी सर, ठीक है सर, मैं देख लूंगा उसको एक बार। हाँ हाँ हाँ। एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो, सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। सो व्हाट इज द टास्क फॉर यू? पहले चीज, push all the assignments on GitHub and share your repo URL in the group। क्लियर है पहला टास्क सबको क्या करना है? ओके सर। ठीक है, चलो एक देर इज अनदर कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट और कर लें आज। सब लोग बताओ एक बार प्लीज। यस सर। चलो जी, Yes, sir. हाँ जी, देर इज अनदर यस सर। कंसेप्ट दैट इज स्कैनर क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय हैज ए रिलेशनशिप? कोई बताएगा? Without using inheritance, we call the child parent class method and variable to child class. Create the object of child class. सोचो एक बार, क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इन द अनदर क्लास within same package or in the different package or or in the different project। डिफरेंट प्रोजेक्ट वाला पढ़ा था हमने, डिफरेंट प्रोजेक्ट जार फाइल बनाना। No, sir. नहीं सर। अभी नहीं नो करना, अभी नहीं करना। नो चलो अभी क्या था, हैजर रिलेशनशिप क्या है? creation of the object of the class in Creation the of another object class. हम्म, of a class in another class within same package or हम्म, a different package. हम्म। चलो, जावा हैज गिवन ए क्लास, जावा हैज गिवन ए क्लास नेम्ड स्कैनर क्लास। क्या नाम है उस क्लास का? Scanner. 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 स्कैनर क्लास। That is used for taking the input from the users। क्या काम है स्कैनर क्लास का? To take the input from user. हाँ जी, स्कैनर क्लास का काम क्या है? To take input Taking from the the user. input from the user. अभी तक हमने इनपुट थी कोड के अंदर डिसाइड करी थी हमने। एज ऑफ नाउ वी हैव डिसाइडेड, वी हैव हार्ड कोडेड द इनपुट्स, द डेटा, द वैल्यू। नाउ वी विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर और User. कंसोल वी कैन से। चलो एक बात बताओ, जावा हैज गिवन ए क्लास, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? Scanner class. Scanner class. पब्लिक क्लास स्कैनर। इस क्लास के अंदर देयर आर सम मेथड लाइक, ठीक है जी। हाउ वी कैन कॉल दिस मेथड्स, कोई बताएगा? Create the Like object of class. object of scanner बहुत class. अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो लेट्स सपोज, so here we have created a class
class 1 main method. Now scanner, how we will create the object of a class? Class name. Using new keyword. Equals to new, then class name. Using, good one, class name scanner as reference variable I'm giving is equal to New and new scanner. scanner, and here we will give system dot in. ये आगे डिस्कस करूंगा, राइट? एज ऑफ नाउ, राइट, आगे डिस्कस करेंगे जब व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैटिक कंसेप्ट. सिस्टम डॉट इन, अभी के लिए क्या पास करा यहाँ पे? एज ऑफ नाउ वी आर पासिंग, व्हाट वी आर पासिंग? Dot in. System dot in. System dot in. Right now, s dot next int. What is the return type of this method? Just type. What is the return Integer. type of this? Integer. To which class this method belong? Scanner. Scanner class. Scanner class. Good one. Scanner class. Now we are taking a which type of value from user? Integer. Integer value. Integer. You can print a message here. You can print, if you want to print, value of a plus a. Now you can execute your code. Please enter value of a 1 2 3. Value of a 1 2 3. We are giving the value when? At compile time or run time? Runtime. Run Runtime. time. Run. Runtime. Let's suppose I want to take the float value. Which method I will use, Kunal? Float value. Which method? Next float. Next float. Next float. Okay. You can print a message again. और अगर हमने int वैल्यू पास करनी है और हमने स्ट्रिंग दे दिया तो क्या होगा? एरर देगा, आप एक बार देखो. Error. Right? Mismatch error. Mismatch. Right? और हमें पता ही नहीं है कि यूजर क्या इनपुट देने वाला है, मतलब मे बी इट कुड बी नंबर और स्ट्रिंग रन टाइम पे. उसके लिए देखो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी वैल्यू देना, वो आपको पता होना चाहिए ना. You can do one thing. You can use next string method or next method. It will treat everything as a string. Okay. If you are passing integer value, it will treat it as a String. string. स्ट्रिंग. ठीक. ठीक है, एक बार आप रन करके देखो. प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ a 1 2 3. प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ f 12.4. कोई डाउट किसी का? चलो अब बात करता हूँ सर ये वैल्यू हम किधर दे रहे हैं सर? स्कैनर वाले क्लास में देते जा रहे हैं क्या? कंसोल में. यहाँ से देखो, यहाँ से दे रहा हूँ. When I'm running the code, अगर आप देखोगे when I'm running the code, here I'm getting a message. Please enter value of a. This message. Now in the next line I'm giving value 1 to 2. Where this value will go? Where this value will go? Integer scanner. Integers में टर्मिनल. Integer a. Integer a variable में. Next line we are printing value of a. Press enter. Value of a 1 to 2. Next message, please enter value of f. It is coming. Now you can give the value 12.45. Where this value will go? कहाँ जाएगी बताओ? f वेरिएबल में. Float है. हाँ, प्रेस एंटर. क्लियर हुआ?
Yes. हाँ जी, एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज। सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। चलो जी, अच्छा ठीक है जी, एक काम और, एक असाइनमेंट हो रहा है। अब एक काम और करते हैं यार, वेडनेसडे और थर्सडे आई विल टेक द फॉलो अप फॉर द असाइनमेंट्स। एक बार ग्रुप में मैं असाइनमेंट के लिए फॉलो अप लूंगा कि किसके कितने असाइनमेंट हुए, कितने नहीं हुए, वेडनेसडे और थर्सडे। तो सब लोग अपडेट करेंगे ग्रुप में जरूर, राइट? एक बार स्टेटस जरूर डिस्कस करेंगे वीकडेज में भी। ओके सर। Sure, sir. ठीक है जी। और एक ना, जितना भी आप लोगों को डेटा मिलता है डीटी हब ग्रुप में, वो सारा डेटा अपने पास सेव जरूर करा करो, ठीक है? ये आप लोगों के काम का डेटा होगा, इट विल बी यूजफुल डेटा फॉर यू। तो जो भी जितना भी डेटा मिले वो अपने पास जरूर सेव करा करो, ठीक है? हाँ जी, प्लस माइनस माइनस। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 2, हाउ मेनी मेथड वी विल क्रिएट? How many methods we will create? Three. Four. Three. और मैं Four. So four, Four. sir. पहला मेथड आपका कौन सा होगा? और Addition. सम एडिशन, सम। Subtraction. हाँ जी, Divide, multiplication. it will return or not return? Return. रिटर्न रिटर्न Plus C and return C. Now, from where we will call this method? Subtraction. नहीं नहीं, ध्यान से देखो, कहां से कॉल करोगे? 4 पिलर्स, From main method, sir. मेन Main मेथड। method. मेन मेथड से सर। क्लास नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। यहां से आपने कॉल करा ओबीजे डॉट सम। एक बार म्यूट करो प्लीज सब लोग, म्यूट करो। टिल लास्ट टाइम वी आर पासिंग द हार्ड कोड वैल्यू, यस और नो? ऐसे पास कर रहे थे हम, यस और नो? Yes, यस sir. सर। Where 12 will go? Where 12 will go? The int a and ये वैल्यू Int A. parameters of some method. हाँ जी, where this value will go? बताओ कहाँ जाएगी? Int a and int b में. ए Int A and int B, बहुत अच्छे। So these are the which type of value? These are the hard coded value. Why we are saying hard coded? Because it is fixed 12 2. Let's suppose I want to take the value from user. How I can take? Using scanner class. Through Using scanner class B. हाँ. So here we are taking the value from whom? किससे ले रहा हूँ? Scanner class. यूजर से सर। Next int. And By using where I'm extend storing? method. Where I'm storing these values? int x1. X1. And second value X2. x2. And what I will pass now? X1 and X2. Good one. These are not hard coded values. User जो भी value देगा 2 3 4 5 6 7 8 10 20 20, right? This method is returning something, yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. Here you can take third value as well. सारी values ले लो ना. Now we will store this result where? We will call which method now? इसके बाद Difference. किसको? From Subtraction. method. Subtraction को. Subtraction. What we will pass? Sum result and x3. Good one, good one, good one, comma x3. तो जो ये values till last time we were hard coding, now we are taking from the User. User. At random time. so we have to take this value x1, x2, x3, x4, x5, x6 from whom? किससे From लेनी है? user. From user. User, sir. Assignment number 3. हाँ जी, assignment number 3 is clear to everyone? Yes, sir. तो ये 3 असाइनमेंट है, किसी का कोई डाउट? सर जो हम स्कैनर क्लास बना रहे हैं सर, उसको क्लास को सर कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, वो जावा में ऑलरेडी बना हुआ है सर, जावा हमें ने खाली बना उसको हुआ है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन. देखो, when we are creating a new Java project, there are some jars, you can see, there are some jars. जब आप एक Java प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके प्रोजेक्ट के साथ कुछ जार फाइल आती हैं, राइट? नाउ स्कैनर क्लास डेफिनेशन, स्कैनर क्लास कोड इज रिटन वेयर? इन दिस जार फाइल. कहां पे रिटन है स्कैनर क्लास का कोड? कहां पे रिटन है? जार In फाइल. the jar file. अभी आगे डिस्कस करूंगा इस कंसेप्ट के बारे में, राइट? But as of now, we can create scanner class object directly. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Clear. हाँ जी, एक बार सर सब एक लोग चैट में. हाँ जी सर प्लीज. सर जैसे स्कैनर और सर इसके सर मेथड, क्लास के मेथड भी सर क्लियर है सर, मतलब आपका क्लियर है, जैसे इंटीजर्स जो आपने लिए, नेक्स्ट फ्लोट, हाँ जी, हाँ जी, ये भी सर वहाँ पे है ना सर, डिफाइंड है सर पहले से। सब कुछ यहीं पे डिफाइन है, सब कुछ यहीं पे. देखो, आपका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लास इंपोर्ट करनी? आपको कंट्रोल स्पेस यूज करो, ट्राई टू यूज कंट्रोल स्पेस. SCANR ऐसे लिखो, SCAN कंट्रोल स्पेस, ऐसे. क्लियर? हाँ जी, क्लियर सबको? Yes, एक sir. बार Yes, चैट sir. चैट में अपडेट करो सब लोग. ठीक है, तो यार एक अनिरुद्ध, हमारी कुछ वर्कशॉप भी पेंडिंग थी ना? हाँ सर, वर्कशॉप तो है पेंडिंग कई सारी, मतलब आपने ग्रुप्स बना रखे हैं, हाँ, लेकिन तो अब सबसे पहले इसको मैं भी अब फ्री हो गया हूँ थोड़ा सा चीजों से. सबसे पहले इसको AWS वाली वर्कशॉप को क्लोज करते हैं. ये अच्छी है काफी. जी इसका सर, प्लान ये करते तो हैं. ये सर हाँ, शायद आपने इसका ग्रुप ही बनाया था। हाँ हाँ, अब मैं इसको हाँ इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ. मैं भी थोड़ा अपना फ्री हो गया हूँ चीजों से. एक मिनट रुकना. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8, 7 को प्लान कर सकते हैं ये. ठीक है, ओके तो सर। मैं इसकी, हाँ, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले. किसी का कोई और डाउट? सब लोगों को वर्कशॉप अटेंड करनी है ये वाली. ठीक है, तो इसको 7 को पक्का एग्जीक्यूट करते हैं 101%. तो 7 तारीख को सर मैं बाहर हूँ सर, 3 से 7 कोई ना, तक सर। रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिकॉर्डिंग भेज इसको एक दूंगा बार भाई. करके देखना पड़ेगा सर, अभी मतलब समझ में तो आई है चीज, लेकिन अभी कैसे करना है वो देखना पड़ेगा सर। हाँ, कोई ना, करो, टाइम लो, बिल्कुल लो. अभी तक चीजें करी हैं तो आगे भी कर पाओगे. जी सर। आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूँ. एक अच्छा एग्जांपल है प्रीति मतलब इतना सही. 12 इयर्स का गैप था इस बंदी का. 12 इयर्स का गैप टीचिंग में थी ये बंदी. और मतलब मेरे को भी शौक, पूरा शॉकिंग न्यूज थी.
2010 में एमसीए करा था और 12 साल का गैप था और जॉब लग गई इनकी। एक अंशुल नाम के बंदे की, इसको 3 ऑफर मिले हैं। शायद अंशुल है यहाँ पे, कॉल पे नहीं है। मोबाइल ऑटोमेशन के लिए था वो बंदा अंशुल। 3 ऑफर इसके पास आए हैं। एक संजीव आपके साथ है कॉल में। संजीव है ना कॉल में? नहीं है संजीव, है। हाँ, संजीव का एक दोस्त था शकील। यस सर। शकील शकील तो नहीं है ना कॉल में? नहीं सर, शक्ल नहीं। शकील का कितना गैप था यार संजीव? हाँ, करीब 3 या 4 साल होगा। 2016-15 में होगा, आपके साथ ही होगा है ना, पासिंग आउट। हाँ हाँ। 5-6 साल का गैप था इसका भी, इसकी भी जॉब लग गई है बंदे की। संजीव एक अच्छा एग्जांपल है। संजीव आपका पासिंग आउट ईयर क्या था? 2014 सर। कितना गैप था जब जॉब लगने से पहले? करीब 4 या 5 साल। और क्या क्या स्ट्रगल करा है वो मैं बताऊंगा कभी। स्ट्रगल संजीव ने तो यार बहुत बहुत, इसने तो भाई ने ट्यूशंस क्या, बहुत ज्यादा। अब सेटल्ड है। तो यार बस मेहनत करो सब लोग ना, मेहनत अगर करोगे तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। दीपक कोई भी एक सब। एक हाँ जी जी, प्लीज छोटा सा त्रिपुरारी भाई। डिस्कशन करना वो रहा था हाँ कि जी। दीपक, एक मार्केट में एक टूल चल रहा है एक टेस्ट रिकॉर्ड करके, जिसमें से कोडिंग का बिल्कुल मतलब नो नहीं कोड नहीं इज नहीं रिक्वायर्ड। नहीं, बहुत वो अच्छा कैसा है क्वेश्चन टूल? त्रिपुरारी। नहीं 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 त्रिपुरारी, जहां पे आप कोडलेस वाले टूल होंगे ना, वहां पे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं होगी, बस मैं ये बोलूंगा। आप कोड लिखना जानते हो तभी तो आपकी रिस्पेक्ट है, तभी आपकी मार्केट में पूछ है। अगर एक एक टूल आपको कोड लिख के दे रहा है यार, फिर आप में और एक मैनुअल टेस्टर में क्या डिफरेंस हुआ? वो भी काम कर सकता है ना वो तो। प्रैक्टिकल सोचो आप, अगर आपको बनी बनाई चीज मिल रही है तो उस चीज का बेनिफिट नहीं है बिल्कुल भी। आप कोड लिख पा रहे हो तभी आपकी रिस्पेक्ट है, तभी आपकी मार्केट में पूछ है। कोई पूछता है आपको मार्केट में, क्यों पूछते हैं? क्योंकि आप कोड लिख पा रहे हो, आपकी लॉजिक बिल्डिंग है ना। उसका फायदा नहीं है भाई, कोडलेस वाले टूल बेकार है सब। और सर साइप्रस क्या है? साइप्रस भी आपका वही टूल है, जावास्क्रिप्ट चलती है उसमें। उसका भी नहीं। ये चीज अच्छे से कर लो यार, जो जावा सेलेनियम और एपीआई कर रहे हो ना, बस ये एनएफ है। और उसके बाद अगर करना है किसी को, मतलब जो अच्छा प्रैक्टिस कर चुके हैं इनकी दोनों की, जावा सेलेनियम और एपीआई की पकड़ सही है, उसके बाद मोबाइल ऑटोमेशन अच्छा है। बट ये चीजें अच्छी है मार्केट में। इवन अनिरुद्ध आप लोगों के सामने का अच्छा एग्जांपल है। आपके साथ मोबाइल ऑटोमेशन में ये अनिरुद्ध, जावा चल रहा है अनिरुद्ध का भी, और अनिरुद्ध ने अच्छा जंप मारा भी। डबल पैकेज कर दिया था करंट कंपनी ने रोकने के लिए। हाँ वैभव सर। वैभव वैभव एक अच्छा एग्जांपल है यार आप लोगों के सामने। यश यश का मोबाइल ऑटोमेशन में जावा चल रही है यहाँ पे। तो यश, यश कब है ज्वाइनिंग आपकी? दीपक भाई 29 को है। वैसे 3 अच्छा, ऑफर है, मैं दूसरी कंपनी का सोच रहा हूँ। तो और ऑफर आगे क्या? 3 ऑफर टोटल आए थे, एक एक्सेंचर का और 2 और थे। तो एक तो दो पोलैंड के क्या लिए है? रिजेक्ट मार दिया, वो लड़ाई चल रही है ना उधर। हाँ, तो अब और इसके अलावा तीसरा कौन सा है? एक ना स्टार्टअप कंपनी है, उसमें सीखने वीखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसमें ज्वाइन नहीं कर नहीं लूँ। नहीं 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 नहीं, रिस्क ना लेना भाई, एक्सपीरियंस ज्यादा है आपका। उस हाँ जी, एक्सपीरियंस पे एक्सेंचर सही है, एक्सेंचर स्टेबल है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो हाँ वो मैं वो आपसे चीज, डिस्कस करूंगा उसकी रिगार्डिंग ना, मैं कुछ कोई कंफ्यूजन दिक्कत थी नहीं, मैं। कोई दिक्कत नहीं। वैभव आपकी बात होगी थी वो पेटीएम के लिए। हाँ, मैंने बोला था, सतीश को कॉल भी किया था, तो वो बोल रहे थे ठीक है मैं चेक करता हूँ। चलो मैं एक बार, मैं पर्सनली हाँ डाल हाँ, दूंगा, बात कर ली, बराबर है ना, कीजिए उससे। मैं डाल दूंगा। हाँ, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ, मतलब पूरा अंदर सेटिंग है। ओके, तो हाँ तो फिर सतीश को मैं एक कोशिश बार करो सर वही हो जाए तो बेटर है, क्योंकि कोई ना बाकी कोई जो है ना, वो भी ठीक है, लेकिन पेटीएम ज्यादा बेटर रहेगा। पेटीएम ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म, ठीक है, कोई ना, मैं बात करता हूँ उससे आपके लिए ना। ओके सर। और बाकी लोगों का कैसे चल रहा है? सर मेरा एक ठीक है जी, क्वेश्चन है। तो यही करो आज पहले सब लोग। हाँ जी प्लीज अभिषेक भाई। सर एक कंपनी है मोहाली की, 3 साल का ठीक बॉन्ड है, साइन क्या मांग नाम? रही है। यार वो उसमें नाम इसका भी तो हुआ है, शकील का भी वही। शकील मैंने ग्रुप में डाला था वही ना? नहीं सर, वो ऐसे ही क्या नाम है कॉल उसका? आया था मेरे को। मैं बताता मैं बताता कोई हूँ आपको हरियाणा। मेरे को। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। शकील का भी वहीं पे हुआ है और वो ज्वाइन कर रहा है।
कंपनी का नाम है, मैं बताता हूँ आपको, कोमल इन्फोटेक पुनियर करके नाम कुछ है ना। से नाम पे कोमल पुनियर है कोई एचआर जो कोई ना, एक बार अभिषेक भाई आप डिग्री। 4 बजे मेरे को कॉल करना, 4 बजे कॉल जी सर। करना, मैं करवा दूंगा, एक बार डिस्कस करता हूँ आपसे। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं सर, पर वो सैलरी पैकेज कम दे रही है बहुत ज्यादा। एक बार इसका नंबर दूंगा मैं आपको, सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ से बात कर लेना, उसकी वहां भी हायरिंग चल रही है। और एक बेबो टेक्नोलॉजी से वहां भी हायरिंग चल रही है फ्रेशर। कोई ना, एक बार आप 4 बजे मैं कोऑर्डिनेट करूंगा आपसे, और एक बार 4 ठीक है बजे सर। कोऑर्डिनेट आपकी एक बार कर ठीक है लेना, सर, करवाता कॉल हूँ कर। कुछ ना कुछ सेट। ठीक है अभिषेक ओके। भाई। ओके थैंक यू सर। ओके जी। बाय बाय सर। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके थैंक यू सर। सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक ओके यू। जी बाय। ओके जी बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू ओके भाई। जी बाय। थैंक यू सर। ओके जी।